Hello friends, good morning. Today is 8th of February 2024 और ये जो वीडियो है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और वो करने के लिए मैं अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको इस्तेमाल करूंगा। दिस इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स मिला के आई क्रिएट दिस। Let's look at what the market is telling us. So currency market को समझने के लिए it is very important we understand a bit of the bond market. So US bond market, German bond market, and UK, India, these are the bond markets I'm following. These are my bond market, general bond market list. Obviously, deeper analysis के लिए हम लोग और भी different type of bond market and credit spread इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इन स्टेइंग इन इंडिया विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हमें जरूरत नहीं है उतना डीप जाने का बट वी शुड एटलीस्ट लुक एट दीज आर इंपॉर्टेंट बॉन्ड मार्केट्स. तो यूएस बॉन्ड मार्केट जो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल 10 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इज कमिंग लोअर. दिस इज यू कैन सी फुल रेड कैंडल और इसका मतलब आप लोगों को अब तक मालूम है दैट दिस इज अंडर बियरिश प्रेशर. Let me change this. This is not the right setup for this. Let me test it, the original setup, fountain of gold. So original setup, I can clearly see that the probability is more of a mixed with a sell with a higher probability. So more of a market, this is a market more turned towards in the hands of the bears, means interest rates are under bearish pressure in the long term. In the short term, I'm also seeing bearish pressure, but not that much because Federal Reserve that is has decided to keep interest rate hold for much longer period. हम originally market expect कर रहा था कि March. I was getting a feeling that Fed might go for a surprise rate cut this first meeting, but it was not. It's actually the opposite. Fed hinted that not before May, we are not hurrying. So that is very interesting situation that Fed is not in a hurrying mode, and the level of interest rate is will they will maintain at a high level. That's a significant cost to the economy. We had seen the sell-off in the US regional banking market after Federal Reserve decisions. uh, so this is very important for us कि हम लोग समझे कि how this central banks will operate. तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट दैट इज नॉट मूविंग लोअर क्योंकि दैट इज मोर कंट्रोल्ड बाय द फेडरल रिजर्व जो बट ये लॉन्ग टर्म रेट्स आज डाउन की तरफ है. दैट इज गुड न्यूज फॉर द बॉन्ड प्राइस, दैट इज गुड न्यूज फॉर द इक्विटी प्राइस, बट नॉट सो गुड न्यूज फॉर द डॉलर इंडेक्स. ऊपर से अभी तक जर्मन बॉन्ड मार्केट दीज आर नॉट ओपन बट ब्रॉडली एक बार चार्ट देखा जाए तो ओवरऑल यूरोपियन इंटरेस्ट रेट्स आर पुशिंग हायर. German rates is around, it's clearly moving higher. That should keep the euro on the bid. Euro को bid में रखेगा. We can see the UK short term rates which is 2 year from the RSI X clear है कि नीचे की तरफ turn लिया. It has taken a turn to the downside. So pound may not get the support from the interest rate, but the euro, if this continues in Germany, euro may get the support it needs from interest rate. So चलिए अब चलते हैं करेंसी मार्केट में. डॉलर इंडेक्स हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में. Momentum fading after the breakout is basically a correction is going on. फिर से buy entry के लिए we have placed the alert. This is the price action bullish alert. इसको लगा दीजिए and you are done. In the daily chart, let it come. Otherwise, we have to wait for a price action bearish, which is a full red candle. Until this two comes, we cannot trade. तो मिक्स कैंडल मिलने का दिस इज द बेनिफिट. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डॉलर इंडेक्स के बाद. वी विल गो टू यूरो यूएसडी. करेक्टिंग हायर
फर्दर करेक्शन, इसको ट्रेड करने के लिए बस अलर्ट लगा दीजिए, प्राइस एक्शन बियरिश, मिनिमम रिक्वायरमेंट, या तो ऑपोजिट साइड जो होने वाला है नहीं, दैट इज रिसेंटली, दैट इज द प्राइस एक्शन बुलिश। तो यूरो का जो करेक्शन हम लोग बात किए कि इट कैन गेट सपोर्टेड फर्दर, इट इज मोर ऑफ अ हैपनिंग इन द 125 मिनट्स, whereas in the daily chart basis it is much stronger, the dollar is much stronger. So यूरो का जो ये बाइंग हो रहा है, इट मे गेट हॉल्टेड इन दिस एरिया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया 1.0812, और ऊपर तक 1.0838। सो वन से लेके फोर, दिस 30 पिप्स रीजन कुड बी अ टफ रीजन, बट दिस इज द मोस्ट टफ लेवल that is coming up for the euro 1.0812. We can try exchange rate from other forex broker as well. This is the level, about same level 1011. So next हम लोग चलते हैं कि यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर विल लुक एट द डेली चार्ट, सिंस हम लोग इंडिया पे है, विल हैव टू बेटर रिलाई ऑन द डेली चार्ट। 125 मिनट्स में एग्जिट हमारे टाइम फ्रेम के बियॉन्ड आ सकता है। सो वी आर सीइंग अ करेक्शन, तो थोड़ा पोजीशन हम लोग स्क्वायर ऑफ करने की बात काली बोले थे, आज कुछ और स्पेशल करना है नहीं, वील हैव टू वेट फॉर फर्दर सिग्नल। सिमिलर जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में भी हम लोग बात किए थे दैट वी हैव टू बुक सम ऑफ द प्रॉफिट यस्टरडे मॉर्निंग पे, और उसके बाद कुछ फर्दर हुआ नहीं, वी आर होल्डिंग ऑन द स्टॉप लॉस सम पोजीशन बिकॉज दिस इज कुड बी फर्दर डाउन मूव, और क्योंकि ये बियरिश रेंज मार्केट है, सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 54, कंसोलिडेशन का 43, तो इट्स अ बियरिश रेंज मार्केट, बाई के लिए हम लोग सोच भी नहीं रहे एज पर डेली चार्ट। सो विल वेट फॉर फर्दर ब्रेकडाउन, फर्दर मोमेंटम कम, सो दैट विल गो एंटर अगेन। सो सम क्वांटिटी वी हैव एनीवे बुक प्रॉफिट, नाउ अदर क्वांटिटीज विल हैव टू वेट। नाउ हम लोग आएंगे डॉलर येन और जेपीवाई आईएनआर में। डॉलर येन देखिए एक रेंज में घूम रहा है, इट्स नॉट क्लियर विच साइड द मार्केट इज, तो थोड़ा पोजीशन हम लोग स्क्वायर ऑफ करना प्रेफर करेंगे, बट मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हिट हो गया था, तो यहाँ से कोई भी पोजीशन यूएसडी जेपीवाई में है नहीं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, दिस कैन बी अ कम बैक, वील हैव टू वेट फॉर द डे एंड। सो यहाँ पे तो अपना डे एंड होगा बाद, मतलब पहले, बिफोर वी कैन वेट द होल डे एंड देन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टुमारो, or we can then speculate when our time is coming to an end using the USD JPY. Next हम लोग देखेंगे is the JPY INR, जो यहाँ पे मोर फैमिलियर है लोग ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है, दिस इज द लेवल। इफ इट ब्रेक्स डाउन 5564 वी माइट सी फर्दर ब्रेक डाउन इन JPY INR। बट यहाँ पे हो सके एक कॉन्टिन्यूअस कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। सो जिनको भी स्पेकुलेट करना है, बेस्ट टू ट्राई विथ स्मॉलर क्वांटिटीज ऑन द स्पेकुलेशन साइड, क्योंकि दिस इज द ट्रेंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। ये जो मूवमेंट था इट वाज हैज बीन स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मोमेंटम डाइवर्जेंस हुआ है, वी आर नॉट सीइंग स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम, कोई फंडामेंटल सपोर्ट भी इसको नहीं मिल रहा है, तो इट्स मोर ऑफ अ कंजेशन लाइकली। तो लाइट पोजीशन इसमें मेंटेन करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर को हम लोग देख रहे हैं a little bit of downside pressure, option जिनको सेल करना है they will try to sell 83 option call short, they will look for 83.25 में कुछ प्रीमियम रहेगा नहीं, they can look for, या 83 will be around good, बट उसके अलावा कुछ है खास है नहीं, दिस इज इन द रेंज, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, वोलेटिलिटी मैनेज करता है, सो नो पॉइंट ट्रेडिंग दिस पेयर। उसके बाद जो और एक रेंजिश पेयर है दैट इज द यूरो जीबीपी, ये भी मुझे उतना ट्रेड करना पसंद नहीं, इसमें हम लोग एक कमबैक देखे थे यूरो जीबीपी में,
बट इट डिड नॉट सस्टेन ये जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी, रेदर फर्दर सेलिंग आएगा आ गया. दिस इज मोर ऑफ अ consolidated market, bearish range market. हम लोग आएंगे इंटरनेशनल गोल्ड और एक्सएयू यूएसडी और स्पॉट और सीएफडी गोल्ड. ये रहा, दिस इज द रेंज, मेन रेंज वी टॉक्ड अबाउट 2037 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा. इट इज नॉट सस्टेनिंग, और अभी जो जैसा कैंडल है, आई प्रेफर इट टू गो अबव दिस एरिया, देन ओनली गोल्ड विल लुक स्ट्रॉन्ग. इट इज ड्रिफ्टिंग लोअर, पॉसिबली ऐसा ही रेंज कंटिन्यू रहेगा. इट्स नॉट अ गुड टाइम टू गो इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन गोल्ड as per this time frame. So daily similar gold in our gold mini is similar picture, better to avoid. इंटरनेशनल सिल्वर हम लोग इसमें बियरिश होने की ऑलरेडी चल रहा है, बियरिश ट्रेड. बेटर टू मेंटेन द बियरिश आउटलुक इन सिल्वर, बट द मूव विल बी ग्रेजुअल. वो क्लियरली दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर साथ में स्ट्रॉन्ग मूव नहीं हो रहा है. सो मूव विल बी वेरी वेरी ग्रेजुअल. सिल्वर मिनी में ब्रेकआउट चल रहा है, विल कंटिन्यू विद द शॉर्ट पोजीशन. ये जो ग्रेजुअल चल रहा है, विल मेंटेन स्टॉप लॉस अभी के लिए 71,213. दिस इज क्वाइट ए गुड स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस मैक्स स्टॉप लॉस था. रेनबो कैंडल इज आस्किंग टू इंक्रीज द स्टॉप लॉस बिकॉज बोथ साइड वोलेटिलिटी कैन इंक्रीज. तो ये सब केस में ऑपोजिट साइड मूवमेंट हो सकता है एंड आपका ड्रॉडाउन मिल सकता है. माइंड कीजिएगा, अगर आप ले नहीं पाएंगे सच ड्रॉडाउन, सो यू कैन थिंक अबाउट स्क्वायर ऑफ सम पार्ट जहां कैरी करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो. बीइंग कंफर्टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक ग्रेजुअली, जब जब से हम लोग सेल की बात किए, हमें रिवार्ड मिला है. ये ग्रेजुअल रिवार्ड है बट मिला जरूर है. सो ग्रेजुअली आई थिंक इट विल ग्रेजुअली ड्रिफ्ट टू 68,700, जो रिवार्ड के हिसाब से अभी भी कुछ लार्ज है. सो डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू होल्ड शॉर्ट पोजीशन. तो उसमें सिल्वर मिनी का चार्ट एक बार देखेंगे. सिल्वर मिनी इज अ बेटर वन, वी लुक एट दैट. लिक्विडिटी या इट इज मूविंग लोअर, तो ये एरिया जो आ रहा है उसके आसपास 71,280, उसके आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे. इसके साथ जो पेयर हम लोग दो और देखते हैं, दैट इज द यूरो येन, क्योंकि इसका भी क्रॉस बनाया जा सकता है इंडिया में. यूरो येन एक सेल हम लोग बात किए थे, जीबीपी येन एंड यूरो येन हम होल्ड कर सकते हैं, बट क्लियरली ग्रीन बैकग्राउंड, दिस कैंडल, ऑल दीज आर सजेस्टिंग विथ व्हाइट क्रॉस. देखिए कैंडल से बाहर कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है, मीन्स दीज हैव स्पाइक्स. दीज आर नॉट गुड टाइम टू गो शॉर्ट. कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पे रेंज दिख रहा है, तो ये जो स्पेकुलेट जो भी है वो स्क्वायर ऑफ करके साइड लाइन में बैठना ही सही होगा. सिमिलर देखिए जीबीपी जेपीवाई, सिमिलर अप मूव. पिक्चर इज नॉट क्लियर. यहाँ पे ऑल्ट ए अलर्ट डालिए कि प्राइस एक्शन बुलिश या बियरिश, और अलर्ट के साथ बाहर रहिए और देखिए क्या होता है. दिस हैज गॉन टू ए मिक्स मार्केट, नॉट अ ग्रेट टाइम टू रिमेन ट्रेड और इन्वेस्टेड. ये सब सिचुएशन में बेस्ट है वेट इन द साइड लाइन, पुट अलर्ट. यहाँ पे जो लेवल्स है वहां पे अलर्ट डाल दीजिए एंड देन वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट. तो चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो रहा है, एंड इफ इट्स हेल्पिंग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.